Welcome to my class. Welcome to my class. Student will join soon. I think yesterday we had started working on worksheet 2. Here we are. Here we are. Pad has been attached. Okay. The equation of one tangent to the circle with center with origin is, then equation of other tangent drawn through the origin. What? So quality question. Oh, let's have a note. Student has joined. Hello, how are you? So this is our question. Try to understand this question. Understanding is most important. Understand the question. Okay. Please. If the equation of one tangent to a circle with center 2 comma minus 1. This is a circle with a center 2 comma minus 1. From origin. This is origin. It is 2 comma minus 1 means it is positive x-axis and negative y-axis. Okay, so your positive x-axis, negative y-axis means where is your center? Center will be at this is 2, this is 2 and minus 1. What is 2 minus 1? This is 1 2, this is minus 1. So this is your center means your origin is here. Minus 1. If you take this is 2, this will be your origin. 0 comma 0. Clear? We have to think carefully. And one equation of tangent is this. This is one tangent. There will be another tangent. There will be another tangent. Okay. And its equation here given 3x plus y is equals to 0. So what is the equation of other tangent? So what is this equation? Clearly, this is passing through origin, means there is no constant in any of the equation. Can you observe? ये जो लाइन है वो भी उसी पॉइंट से जाएगी ना, तो सेंटर से वो मतलब पॉइंट 0 का मत 0 है,
वो तो पक्का है। ओके, तो अब हमें ये पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो पता चल गया। लाइन इक्वेशन निकालने के लिए क्या ज़रूरत है? दूसरा पॉइंट चाहिए। ओके, दूसरा एक और पॉइंट चाहिए। अब हमें टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए या तो दूसरा कौन सी पॉइंट है, वो यही पॉइंट चाहिए। कोई और पॉइंट से भी होगा लेकिन उससे हमें वो पकड़ नहीं पाएगा। वी नीड दिस पॉइंट। ओके, एंड हाउ कैन वी गेट दिस पॉइंट? एंड ये सर्कल है। ओके, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंट? 0, 0. Think with these weapons only. Till now, whatever we have, the method we have to think with that information only. So, this is 90 degrees. Okay, this is 90 degrees. This will be the perpendicular distance. This will be the perpendicular distance. What is this distance? Can you guess? What is the perpendicular distance? What is the point to line distance? Point to line distance. R is equals to perpendicular distance from 2 comma minus 1 to 3x plus y is equals to 0, or y plus 3x is equals to 0. You have to keep like this. Y plus 3x is equals to 0. All lines passing through origin, that will fail here. So what is the perpendicular distance formula? What is the perpendicular distance from point to line? For example, x1 comma y1 is a point. Ax plus by plus c is equals to 0 is a line. What is the perpendicular distance? क्या होगा? याद करो, ये याद होना चाहिए। All problems are not simple. याद करो, कुछ याद आया? मैं आपको बोलूं, ये फॉर्मूला कहाँ पे है? ठीक है, आपके 9th की क्या था दोबारा बोलो। ये पॉइंट कहाँ पे है पता? आपके सीडीएफ बुक में जो स्ट्रेट लाइन्स की 31 पॉइंट्स है ना, उसमें बैक पेज में ऊपर से तीसरा या चौथी फॉर्मूला है। मैंने लिखा था बोर्ड पे एक बार 15 फॉर्मूला विदाउट watching the book and all. 15 points. Then next day, next 15 points are written. No. ax1 plus by1 plus c mod by under root of a square plus b square. यही होना चाहिए। कुछ याद आया? बैक साइड है, वो लेफ्ट पेज है। let me check. Where is your ninth class? लास्ट पॉइंट नहीं है, बताता हूँ। हाँ, हो सकता है पेज का लास्ट पॉइंट। हाँ, पेज का लास्ट पॉइंट है ये। 9th 2024 सीडीएफ चाहिए। तो ये देखा, पॉइंट टू लाइन सर्कल्स में भी आएगा, ट्रायंगल्स में भी आएगा। कहाँ कौन सी पॉइंट कहाँ यूज होता है भाई, इसको एक बार बता देना। नरेश सर ने याद किया हुआ है। ओके, विनमय कृष्णश्री इज अ गुड स्टूडेंट। Let's go for the, just I'm confirming the formula. We know the formula but we need to confirm। हाँ, आ गया। हाँ, देखा आपने यहाँ बोला था। हाँ, यही है भाई, आपको भी याद है। It is the same, but is the perpendicular distance from a point x1 y1
to the line ax plus by plus c equals to 0 is mod of ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. This is the point. Point is x1, y1, a, b, c are line formula. Okay, clear? Everything will be helpful. Everything will be helpful. We need each and every point. एक point भी नहीं जाना चाहिए. I'm trying to make your help notes. ठीक है, मैं आपके लिए हेल्प नोट्स बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़ेगा. आई एम थिंकिंग एक पीडीएफ ही डिजिटल नोट्स बना दूंगा पीडीएफ के अंदर ही. ठीक है, तो अब ये क्या है फॉर्मूला. सेंटर तो 2, -1 दिया हुआ है. दिस इज द रेडियस. अब रेडियस से आपकी सर्किल इक्वेशन आएगा. ठीक है, अब सर्किल इक्वेशन तो आएगा, बट ये इक्वेशन कैसे निकलेगा वो तो हमने निकाला. सर्किल इक्वेशन आएगा, पॉइंट है. Okay, what is this equation? How can we get this equation? This equation, how can we get this equation? And okay, this length and this length must be same. दोनों का लेंथ सेम होता है. ओके, तो वहाँ से कुछ इक्वेशन बनेगा. मामला देखना पड़ेगा. अब ये लेंथ का है, उसके लिए सर्किल इक्वेशन की ज़रूरत है. सर्किल इक्वेशन की रेडियस की ज़रूरत है. लेट्स फाइंड आउट द रेडियस. 2 into 3. 2 into 3, मैंने ये गलत लिखा. 2 into 3 -1 plus 0 by under root of 9 plus 1, which is 6. 5 by root 10, which is under root of 5 by 2. Under root of 5 by 2 implies r square is equals to 5 by 2. Your circle equation will be x minus 2 whole square plus y plus 1 whole square. ये सब आपको करना पड़ेगा. हाँ, 5 by 2. अब इसको ऐसे ही रखो. हमें क्यों एक्सपैंड करके ये छेड़छाड़ करना चाहिए. y plus 1 होल स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 0. तो ये है आपका इक्वेशन s इज इक्वल्स टू 0. ये है आपका इक्वेशन s इज इक्वल्स टू 0. अब आपका कैसे बनेगा इक्वेशन. कैसे बनेगा इक्वेशन. x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2. सर्किल इक्वेशन तो आएगा. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस पॉइंट. ये पॉइंट क्या बनेगा. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. डू यू हैव एनी आइडिया. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का हमारे पास फॉर्मूला है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला है. वी नीड टू गो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है. रिवाइज करो. आपने ये सारे पॉइंट्स लिखा है जो इसके अंदर आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वी हैव दिस. So it is under root s11. We have this length of tangent is square root s11. So that is okay. But we need point of contact. This intersects and all. Tangent. Hmm. है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सीधी फॉर्मूला है हमारे पास. वो सब याद होना का. ऐसा है फॉर्मूला. कहाँ है. विच वन. देखेंगे देखेंगे. ये तो पार हो चुका है. इंटरसेक्ट. हाँ. ओह ओके. हाँ, तो इससे आपको एक तो y प्लस एक्स. वन इज प्लस एम एक्स, वन इज माइनस एम एक्स. एक्स स्क्वायर. Slope form of equation of tangent to slope of slope m is given. Once m is given, then we can get the equation, but we don't require this point formula. हमें इससे कोई दिक्कत काम नहीं होगा. And s1 is equals to 0. We should know the point. Okay.
The equation of tangent is x cos theta plus y a sin theta. What is theta? Hmm, What is theta is what is theta? Theta. Uh, it is perpendicular. Okay, y equals to mx plus c. Let y equals to mx plus c. M has been given. This is circle. Then the perpendicular radius is so and so. Okay, we have to use this formula only. X1 is plus minus. Plus minus means how can be? Okay, one is with plus, one is with minus. Another one is plus, another one is minus. Try to understand this formula. Try to understand this formula. Y equals to mx plus c is the tangent. तो हमें equation जो दिया हुआ है, so what is the equation we have it? So our equation is 3x plus y equals to 0. 3x plus y is equals to 0. What is the equation? Y is equals to minus 3x. What is the m value? M value is minus 3. M value is minus 3. Okay. X square plus y square is equals to a square. A value is 5 by 2. A value is 5 by 2. We have a value is 5 by 2. Okay. Substitute both in this equation. We have to take this case. This is our point of contact. And m is minus 3. M is minus 3. A. Here m is equals to minus 3 and a is equals to, this is your a square. A is nothing but a square root 5 by 2. Root 5 by 2. So therefore x1 comma y1 is equals to x1 comma y1 is equals to plus minus am. Going to complicate. It's going to complicate. प्रॉब्लम को ऐसे नहीं करना चाहिए. हमें रिवर्स अटैक करना पड़ेगा. How can we say whether it is touches or not? How can we say whether it is touches or not? Think problems are not simple. How can we say whether it is touches or not? And we don't know the point. We have only tangent. We have only tangent. We have only tangent. We get the distance. Of course, our radius is okay. Circle equation is also okay. Okay, if it touches, we must have the point. For example, in the first case, 3x minus y. Can you get the solution? Other equation.
We didn't see this kind of problem previously. Mm, slopes we can't say. We will have the angle. So there is no relation. They are intersecting lines. That's it. They are intersecting lines at origin. Both lines, all four lines intersect at origin. Okay. And the radius we got it. It's a root 5 by 2. The radius is this. Okay, we have s1 is equals to 0. How? We have s1 is equals to 0. That is the equation. The point is, it is center. Na? Why he took that point? Okay, that is one tangent will come because it is passing through. No, x1, y1 is center. Who is given s? Who given s is equals to? Yes, तो हमें भी आ चुका है. Who given s? What is third question? Oh, sorry, that is CQ. That is CQ. That is CQ. Hey man, you have to send it. It is L1. Okay. हाँ, we have the same logic. यही तो आ चुका. हमारा radius तो आ गया. Radius we got it. M is equals to -3. हाँ, he try to understand this. Everything has been drawn. It's a distance from line to is 5 by root 10. We got the same. And equation of line which is y equals to mx. That is also clear. If the tangent line, if the line is tangent to the circle, okay. समझ गया. Now come. भाई ये distance root 5 by 2 और 5 by root 10 हो गया. ये distance कितना होगा? ये distance कितना होगा? वो भी 5 by root 10 नहीं होगा. Radius ना that is. Okay. So r is equals to it's a perpendicular distance. We have the formula and we got it. It is 5 by root 10. And अब इसका जो equation है इसकी standing form है y is equals to mx. It is a standard equation. Okay, it is a standard equation. And from this length, its distance must be 5 by root 10. Therefore, perpendicular distance from 2 comma minus 1 to y is equals to mx is 5 by root 10. We approached the total solution, but last moment. So this equation is mx minus y is equals to 0. So if you take this is ax plus by is equals to 0 plus c is equals to 0, and this is a point x1 comma y1. Your perpendicular distance is r. Okay, 5 by root 10 is equals to mod of a. What is a? It is m. 2m 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 plus by1 minus 1 into 1 1 and plus c, there is no c, it's a mod by under root of m square plus 1. So we have to simplify. If you simplify, you have to take both sides square. It is
5 by 10. So it's a root square. 25 by 10 is equals to 2m plus 1 whole square by m square plus 1. M square plus 1. Simplify. 25 m square plus 1 is equals to 10 into, it is a 4m square plus 4m plus 1, and therefore it is 40m square minus 25m square plus 40m plus 10 minus 25 is equals to 0. It is a 15m square, 15m square plus 40m minus 15 is equals to 0. 5, you have to take 5, you have to take 5. 5, 3m square plus 8m minus 3 is equals to 0. Okay, it's a 9 ones are, it is 3m square plus 9m minus m minus 3 equals to 0. 3m m plus 3 minus 1 m plus 3 is equals to 0. Therefore m is equals to minus 3 comma 1 by 3. Already with minus 3 we have already the equation with minus 3, because if it is minus 3, y plus 3m is equals 3x is equals to 0, which is already given. Y plus 3x is equals to 0. Therefore now you have to take y is equals to mx, y is equals to mx with m is equals to 1 by 3. So therefore x minus 3y is equals to 0. It's a clear instruction. X minus 3y is equals to 0. Option number 3. Okay, clear? Keep in mind this method. Keep in mind this method. Let's go to the next problem. देखा, एक एक प्रॉब्लम को करने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. चलो देखते हैं. This is level 1 completed. What about level 2? Level 2, level 2, level 2. Okay, so what is the question? Equation of circle touching both axes and radius 5. Touching both axes. Touching both axes, radius 5. Radius 5. Touching means g square minus c is equals to 0. F square minus c is equals to 0. और g square नहीं, ऐसा कुछ है कंडीशन, ऐसा कुछ है कंडीशन, ऐसा ही कुछ है कंडीशन. This is the distance, na? G square minus c will be the distance. Square root of g square minus c will be the distance. We can go. We need to recall कि प्रॉब्लम करते वक्त देखेंगे प्रैक्टिस फाइनल पे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम, हाँ देयर इज अ टू. हाँ. If it is passes through the origin, okay, circle is passes through the origin, then c equals to 0. That is different case. We have this formula. They are the intercepts. This is touches y-axis. This is touches x-axis. All these cases. Now here we have. Okay. Here it is the formula. What happens? What happens here? If it touch, I written same. See,
This is the logic. Under root of f square plus g square minus c is equals to 0. Okay, but this is a radius. No, I think radius. It is a radius. It is a radius is equals to mod minus f minus f. Okay, got it. So we have two equations. One is c is equals to g square. Another one is c is equals to f square. If it touches, radius is equals to, so where is alpha is radius. If it touches, x square plus y square minus 2 alpha x minus 2 alpha y. Please note this, write down this point. इस point को लिखो. Important. If the circle touches, both coordinates, okay, both coordinates with center alpha comma alpha in first quadrant, then the equation of circle is, x square plus y square minus 2 alpha x minus 2 alpha y plus alpha square is equals to 0. Second point, if circle touches both axes, and c greater than 0, then f is equals to g is equals to plus minus root c, f is equals to g is equals to plus minus root c. दोनों पॉइंट्स लिखा है. Okay, plus minus root c. And now, so this is the case when alpha greater than 0. Okay, टचेस का मीन्स दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए तभी सर्कल बनेगी. ऐसा तो नहीं बनेगी, एक छोटा एक कम, ये डिस्टेंस. If the circle touches an alpha, if circle touches both coordinates, your center is in this form only. Either alpha alpha minus alpha alpha, minus alpha minus alpha, alpha comma minus alpha. Okay, so this is the case, and this is the different. What is the third point we have written? For c greater than 0, f is equals to g is equals to plus minus root c. We have to get that logic. हमारा प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? c greater than 0 सबका दिया हुआ. सब में c greater than 0 दिया हुआ. देखो, c greater than 0, c greater than 0, c greater than 0. Is it clear? C greater than 0. Here, what is the logic? What is the equation I said? G is equals to f is equals to plus minus root c. G is equals to f is equals to plus minus root c. But still we get the all are same. Can you see? G is equals to f is equals to, here G is, in this case G is minus 5. Okay. So in all cases you will get the same answer. What is G is equals to, here what is G? G is, what is G here? बताओ मुझे G क्या है? अब -5 square root, it is c greater than 0, it is square root 5 plus minus root 5. No problem, it is true. Plus minus root, it's a plus minus root 25 means both are true. And here in this case it is -5 is equals to plus minus root 25. It is true. Here plus minus, it is all above. Okay, there is one more circle also will come.
What is the circle? यहाँ पे तीन सर्कल plus very good plus it is minus means this is for third quadrant. Okay, the first quadrant वाला miss हो गया, so that is the fourth circle. See, this kind of things will happen. So here like this equation also will happen, and like down also will happen, and then down also will happen. All will condition will the same equation. We will get four equations. Okay, and in any case, so c must be greater than 0. C less than 0, what happens? C less than 0, what happens? C less than 0, what happens? Wait a second. Huh. So there is an issue. Root negative, this is not happen. But when C negative, we have to see, this is a key point. This is a key point. Note it, note down. Okay. It's an important point. There is a logic. He already given in the text. When C negative, what happens? C negative, it is complex circle. Okay, I have seen, अगर ये जो हम अभी देखेंगे, अभी देखो इसको आगे जाने की क्या जरूरत है. तो when C negative, he defined what happens when C negative. Be patient when what happens when C negative. Okay, now we have to go line by line. What happens when C negative? C negative तो होना नहीं चाहिए, but C negative तो होगा. It is a equation. So it is plus C has been taken. Okay, G square is equals to C means touches means C must be positive. Okay, touches means C must be positive. If C is, can you see, if circle touches x-axis, G square is equals to C means G square is equals to C means C is positive. If C is not positive, it will not touch. Logic. Okay, समझ गया? If C is positive, no, it is not like that. If C is positive and equals to G square, then it is touches. If C is positive and equals to G square, genuinely it touches. Okay, genuinely touches. Okay. He mentioned all cases are C is positive. C is positive. All cases are C is positive. C is positive. C is positive. All cases are C is positive. C is positive. We have to see when C is negative. When C equals to 0, it intercepts x-axis, y-axis. Note this point, Your Honor. When C equals to 0, means there is no constant, means uh, oh, it passes through origin. No, a circle passes through origin. Then it is C is 0. Okay. When C is negative, we need to get when C is negative. Okay, we'll see later. It's not coming. Oh, okay, come to here. What about second question? ये तो सिंपल है. हाँ, see, this is a circle. Okay, angle between the tangents means he given this angle. ये एक tangent है, ये एक tangent है. Sorry, मेरा tangent secant हो चुका है. Okay,
ये एक टेंजेंट है. ओके, सो विथ सर्किल विथ सेंटर, ये पॉइंट दिया हुआ है भाई 4,5. Drawn from P, it is -2 comma -3. E is 120 degrees. 120 degrees. Then the length of the tangent. भाई इसको कैसे find out करूँ? I written all information. Now I can go here. How can we do? I will rewrite the circle, rediagram, redraw. It is a point -2 comma -3. This is a tangent. This is another tangent. This is 120. This is a point 4 comma 5. What happens? He is asking this distance. किसी ने tangent दिया हुआ है इसमें? Tangent तो दिया नहीं है. Point दिया, angle दिया, angle 120 दिया हुआ है. He given the angle. He given the angle. He given the angle. हम इसको एक right angle triangle बनाओगे. ये 90 बनेगी. Okay. अब ये point, ये distance तो हमें पता चलेगा. Find out this distance. How can you find this distance? Sorry, ये 90 बनेगा. Control Z. ये तो एंगल है, ये एंगल है, ये 90 है, ये नहीं है. ठीक है, दिस इज 90, दिस इज 90 डिग्रीज यहाँ पे है. देन दिस इज हाइपोटेन्यूज. ध्यान रखना चाहिए, अपोजिट टू 90 इज ओनली हाइपोटेन्यूज. हाँ, व्हाट इज दिस हाइपोटेन्यूज? व्हाट इज दिस हाइपो? बताओ. हाइपोटेन्यूज क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. कैसे निकलो? तो वो आना चाहिए. आप मेरे से डरते हो क्या? हाँ, मत डरो भाई. सी, आप आप तो डांटने वाले बच्चे नहीं हो, ये तो पक्का है. मतलब मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ. आपको आप डांटने वाले, डांट सुनने वाले बच्चे तो है ही नहीं. आप करते हो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में, उधर इधर हो सकता है, डिले वगैरह, नेग्लिजेंस वगैरह. आप ओपनली बात करो, मैं आपको डांटने के लिए नहीं बैठा. ओके, दिस इज 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर plus 8 minus of minus plus 3 whole square. So this is 10. 6 square plus 8 square, 64 plus 36 is equals to 100 square root is 10. ये आपका 10 आ चुका है. ठीक है, अब ये 120 है. ठीक है, सीधी सी बात है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये ब्रेक होता है, ये 60 है और ये 60 होता है. तो इसका मतलब हमें एक ऐसा ट्रायंगल बन चुका है. ओके, ऐसा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को रीशेप कर रहा हूँ. हाइपोटेन्यूज आपका 10 है. ओके, हाइपोटेन्यूज आपका 10 है, ये 90 है, ये 90 है. ये हाइट के साथ था ना, हाइट से ला ना रखने वाला, बेस के साथ ही ये 60 है और ये 60 है. ठीक है, और ये पॉइंट पता है आपको, व्हाट इज दिस, ये सेंटर है आपका 4,5. ठीक है, और जो 10 है ये वाला पॉइंट है आपका -2, -3. अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. दिस इज 60. तो वी वांट इन दोनों पॉइंट्स, इन द वी वांट दिस लेंथ. व्हाट इज दिस? हाउ कैन यू गेट इट? Hypotenuse adjacent theta. What is the formula we have to use? Cos theta. Cos 60 is equals to adjacent, let it be x by hypotenuse is 10. What is cos 60? Implies x is equals to 10 cos 60. What is cos 60? Cos 60 1 by 2. So what about x is equals to 5?
Is there any answer 5? Yes, that's it. क्लियर? यहाँ पे इन सारे प्रॉब्लम्स बेस्ट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब आपका नोट्स को प्रशंसा करना पड़ रहे हैं गलती से, तो प्रशंसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ना इसको बहुत सुधार कर सकते थे, वो सुधर ही नहीं रहे। सो नाउ, so level 2 is completed. Level 2 is completed. So this is a problem number 4 and problem number 5. Ha. Can you read problem number 6? The center and radius of the भाई समझो इसको, प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये आपकी, yes, you are a 10th standard only because it is a high level to you, I can understand, but you don't have any way. कहाँ गया इमेज? ओ इधर है। The center and radius of circle with a segment of line center, he's asking what is the center, what is the radius. A line segment of line x plus y, of course ये लाइन है, लाइन सेगमेंट जो मुश्किल है। कट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एज डायमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझा दो, बस इतना इंग्लिश समझा दो मुझे। आप स्टूडेंट, आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ। सेंटर रेडियस तो पूछ रहे हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पे एक सेंटर एक रेडियस, एक सेंटर एक रेडियस, एक सेंटर एक रेडियस, एक सेंटर एक रेडियस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, x axis, y axis as diameter, as diameter, as diameter, as diameter. Circle with the segment of the line, this line is, if the center is origin, if the center is origin, very good, very good, good thought. ये कैसे आया आपको? ये थॉट आपको खुद ही आया? हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ हाँ, तभी मिल सकता है वो, ताकि इसी से निकले। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड थॉट, गुड थॉट। ओके, वरना तो कोई और से तो बनेगा ही नहीं, सेंटर ऑरिजिन में होगा तभी ये डायमीटर बन सकते हैं। अच्छा, तो ये क्यों नहीं बनेगा? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वाई एक्सिस नहीं आ रहे हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ तो डायमीटर तभी बनेगा, सेंटर ऑरिजिन है, तो हमें बाकी सबको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो यही है। एक और लॉजिक बोलूँ मैं? ओके, तो ये खुद डायमीटर है, तो सेंटर डायमीटर के ऊपर रहेगा, रहेगा ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेंटर लाइस ऑन डायमीटर, ऑन डायमीटर, तो भाई ये लाइन दिया हुआ है, खुद ही बता रहे हैं लाइन सेगमेंट ही आपका डायमीटर है,
इसकी लाइन सेगमेंट ये आपकी डायमीटर है, तो लाइन सेगमेंट के ऊपर ये सेंटर रहेगा कि रहना चाहिए। तो आपको ये सजेशन है, दूसरा कोई और पॉइंट भी देगा तो हमें आंसर आना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वेरिएबल सर्कल passes through a fixed point p comma q and touches x-axis, then the locus of the other end of the diameter through a. A variable circle passes through a fixed point p comma q. इन सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है p comma q and it is touches x-axis, means ये touches करेगा, यहाँ पे touch करेगा, यहाँ पे touch करेगा। जब touch करेगा तो g square is equals to c, जब टच करेगा तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, एक्स एक्सिस को टच करेगा। इफ टचेस एक्स एक्सिस, it touches x axis, then g square is equals to c, g square is equals to c, c is वो तो कांस्टेंट है। व्हाट इज द आंसर? दो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दो सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ इसमें और इसमें ही जी स्क्वायर मिलेगा, सी मिलेगा, बाकियों में जी है ही नहीं। जी है क्या उसके ऊपर? उसके ऊपर जी है क्या? नहीं है। और ये फिक्स पॉइंट के थ्रू पास हो रहे, तो भाई ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है कि नहीं करना? तो कौन करेगा उन दोनों में? p, p, p comma q, it is xp minus p whole square is equals to 4q square, 4q p minus p, it is 0, 4q y है। ये तो सेटिस्फाई करने हैं, wait, the circle passes through this point, 4px, 1 2 तक तो रीच हो चुका है, 1 and 4 तो यही होना चाहिए, एंड इसमें f तो आएगा नहीं, वो तो आ चुका है। अब बात, अरे नहीं भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत बात है, दोनों में है, दोनों में। दोनों में है। A variable circle passes through the fixed point p comma q and touches the x-axis. Touches the x-axis means g square is equals to c. G is nothing but x coordinate. तो यही होगा, यही होगा। x कोऑर्डिनेट का मीन्स g यहाँ से बनती है, 2gx आएगा। इसमें px है बट वो q स्क्वायर है, वो नहीं हो सकता। q स्क्वायर p स्क्वायर है, उसकी जरूरत नहीं, ये तो सही है। एंड g स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ओके, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, इट इज p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ये तो हो गया। The other end of the diameter, oh, what is asking other end of the diameter? ये पॉइंट डायमीटर के p स्क्वायर q स्क्वायर p माइनस q होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2px q, 2xq, 2xq, 2xp, हाँ, this is p. This is the only equation satisfies g square is equals to c. This will not satisfy. No, this is also satisfied. C here, here, okay.
Here it will be C and both will be P, both will be Q. Both will be P, both will be Q. The other end of the diameter through A, through A, through A. One is P, one is P, one is P. P x minus P. The answer is touches x-axis. When it touches x-axis, सोचना पड़ेगा इसको. Variable circle passes through the fixed point A, P, Q and touches x-axis. The locus of the other end of the diameter through A is x minus P whole square is equals to. It is wasting time. Don't waste the time. Q square. Circle passes through, touches x-axis. ये तो condition आ चुका है. The locus of the other end. This is the locus of the other end means he is asking this locus. This locus means it's a circle only. It is circle only. But the center, if that is the center, that is a center. What will be the center? What will be the center? If it touches x-axis, then x coordinate is fixed. X coordinate is fixed. Y coordinate could be vary. And this is the diameter. This is the diameter. Able to get any idea. Unable to get any idea. Unable to get any idea. A variable circle passes through the fixed point A of P, Q touches other end of the diameter A through A. So this is a fixed point passes through the circle. So we need the path. What is diameter formula? We have to use that logic. तभी आएगा आपका. Okay. What is the diameter formula here? Diameter formula. This is, if this is any other point, the diameter formula is, what is the diameter formula? Diameter is leave it. Don't waste the time. I'll come to this point again. अरे भाई 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चंस किए हमने, बहुत गलत बात है. Level 3 problems. The interval, let's have a look into it. The interval in which lambda should lie cut circle in real points. The interval in which the value of lambda should lie the line cuts the circle in real points. This line cuts the circle in real points. What are those things? A and B. This line cuts. For example, this is your circle, this is your line. Two real points में कट होने के लिए कंडीशन क्या है? लैम्डा. The locus of points of intersection of perpendicular tangents drawn to each circle whose diameter is. The locus of points of intersection. इसका तो देखना पड़ेगा. If the squares of lengths of the tangents from the point P circle, so and so. Number of circles, all the lines touches. 3x plus y plus k equals to 0 is a tangent to the circle, then k equals to.
the equation of normal, the point is -4. This is the normal equation. It is, of course, it will come. The length of intercept made by so and so on x-axis, so and so on y-axis, so and so on z-axis. Can you try these problems? 14, 15, 16 try करो. Try these two problems. 14, 15, 16. The length of interior cutoff from a line by a circle. पूरा करो. Try to get it. फर्स्ट दो तो 14, 15 तो आना ही है आपको. 14, 15 तो आएगा. फोर्टीन आंसर इज 5. What is the G value? देखो देखो 2 into 14 का 10, 15 का भी आएगा. 15 का भी देखो. 14 ये दोनों आ गया. Okay. Now the length of chord. Okay. Length of chord means that is intercept only. See, this is a circle. Okay. A line cuts. So this is chord na circle के लिए तो. Okay. This is chord. This is radius. Okay. And D is this perpendicular distance. अब ये पॉइंट तो पता होना चाहिए. व्हाट इज सेंटर? सर्कल इसकी सर्कल अलग है. व्हाट इज द सेंटर? 2 comma -2. What is the line equation? X minus 3y minus 13 is equals to 0. इस पॉइंट को इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो. So that is your D. This is your D. Okay. And इसका रेडियस निकालो. सर्कल की रेडियस निकालो. This is your R. So this is actually Pythagoras theorem. ये डिस्टेंस आएगा ना, तो ये डिस्टेंस इस तरफ भी है, इस तरफ भी है. दैट्स वाई 2 into अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. निकालो आंसर निकालो. आप खुद ही करोगे. Just give me 1 minute.
I think you have seen my rice cooker. I cooked I cooked dal. I cooked curry in that. इसने जो राइस भी चला दिया और कल रात को मैंने दाल भी बना दिया था. हाँ, you need to get the answer. You need to get the perpendicular distance d value. पता नहीं, आपको पता होना चाहिए. पॉइंट है, परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है? आपने ही तो बोला था याद से, पेज के लास्ट में है. बट वही है. सी, ऐसे चीजें होते हैं, हमें चीजें टाइम पे याद नहीं आता, बट जब युद्ध के लिए लड़ेंगे ना, जब पाकिस्तान के लिए अटैक करना है, पहले पानी रोका. हाँ? पानी रोका, फिर उसके बाद उसकी एयरबेस उड़ा दिया. अब आ जाओ, एयरबेस उड़ा देगा तो सर्विलियंस निकल जाएगा, कहाँ से लाएगा? तो हम फॉर्मूलास आएगा, फॉर्मूलास तो आना ही है. ये मेरा लाइव चल नहीं रहा है, लाइव इज वर्किंग. आया डी वैल्यू. Further, I will go for the next. But let me check my YouTube live is working fine or not.
यस, आर क्या है? रूट 5 और रूट 25? What is r? Under root of g square plus f square minus c, which is under root of g is 2 to the 4 plus 4 minus 9. Huh? Sorry, minus 3. Minus 3. It's a root 5. R is root 5. What is d? d आपको आना चाहिए root 5. Root 5 by 2 means it's 5 by 2. 10 minus 5 ये तो स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर रूट के अंदर ओके ओके इट इज 10 minus 5 means 5 5 for the 20 by 2 nothing but root 10 ओके इसको फटाफट करो सबके सब एक ही फॉर्मूला सबके सब एक ही फॉर्मूला है evaluate it what is the formula what is the formula to be used root s1 is the square root s1 no the square root s1 s11 direct direct you can do what is x plus x1 direct substitute 9 plus 16 minus 9 minus 16 plus 1 is equals to 1 I did one you have to do rest same under root of 1 plus 9 minus 2 plus 12 minus 11 13 minus 13 it's 3 यही तो तुम गड़बड़ करते हो वैसे तो तुम गड़बड़ तो नहीं करते हो नारायणा के हिसाब से बट नारायणा के हिसाब से तुम बहुत ही डल स्टूडेंट हो लेकिन नारायणा में तुम टॉपर आते हो मतलब डल का मतलब डल नहीं है नारायणा में ना कोई गड़बड़ है नारायणा कारपोरेट में इन लोगों को पढ़ाना नहीं आता k equals to minus 2 yes okay next
मेरे कोचिंग सेंटर में एक बिहार का स्टूडेंट अपने टीचर के लिए एक बहुत बड़ा कॉटन में ना लीची ले आया। बहुत लाया था, एक पूरा बॉक्स बिहार से लाया था उन्होंने। इट इज -2। व्हाई इट इज टेकिंग टाइम? फटाफट करो। अब तो बचा वही है क्यू। अब पी 5 होना चाहिए। तो ये 18 का समझाओ मुझे, 18 कैसे करते हैं? हम्म, कैसे करोगे? मैं आपको बता दूं भाई, ये सर्किल है, इसकी सेंटर भी दिया हुआ है, रेडियस भी पता चलेगा। ये लाइन इस सर्किल को इस पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है। व्हाट इज द टेंजेंट लाइन इक्वेशन? व्हाट इज द टेंजेंट लाइन इक्वेशन? S1 इज इक्वल्स टू 0। सर्किल भी दिया हुआ, पॉइंट भी दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज S1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमें यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन करोगे, दिस विल बी ax प्लस by। आई एम राइटिंग एडवांस्ड इक्वेशन। ये x से x1, नॉर्मली x1 क्या है, s1 क्या है? s1 इक्वेशन क्या होता है? x से x1 प्लस y1 प्लस 2g, नो नॉट 2g, प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अब a b क्या है, x1 y1 है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन करोगे, यू विल गेट ax प्लस by प्लस g इसके आधा है, -2 a प्लस b x -4 b प्लस y -5 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम इक्वेशंस है, ये दोनों
same equations. But while you solve, so you will get, I am taking a little bit additional rough work here. X कोफिशिएंट ये दोनों सेम है, these two are same. अब ये मैच करके ए बी से निकालना पड़ेगा, ए बी के. So x कोफिशिएंट क्या है? It is -2 plus a. -2 plus a is equals to 3. x की कोफिशिएंट यहाँ से, तो a equals to 5. b की कोफिशिएंट क्या है आप बताओ? y की कोफिशिएंट b -4. b -4 is equals to -4. b equals to 0. अब बचा k. अब k के लिए सारे कांस्टेंट्स आएगा. -2a -4b -5 is equals to -k. b 0, a 5. Therefore k is equals to, this is 0, -10 -5 is -15. अब k plus a plus b by 5. K is -15 plus a is 5 plus b is 0 by 5, -10 by 5. So answer is -2. Cross check करो, आंसर चेक करो. Worksheet 2 problem number 18 is -2. What is the answer? 4. So I think somewhere we are doing mistake. गलती पकड़ो, प्लस की जगह माइनस किया होगा तभी तो ये प्रॉब्लम आ रहा है. a -2 सही है. Where we did mistake? समझे नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलो. Okay, a -2 by 3 is equals to 1. Okay. b -4 by -4 is equals to 1. Okay. Okay, इन दोनों को मर्ज किया, सब कुछ किया. What he got it? What is the answer? But how can we get k? k यहाँ से भी तो आएगी. हाँ, आई थिंक मैंने यहाँ से एक मिस्टेक किया. k कहाँ से उठाया मैंने? 3x - 4y - k కదా. सुनो, what is -2 ये? It is -3 होना चाहिए था ये. k वैल्यू में मिस्टेक किया. So what we did is, it is okay. दोनों पॉइंट्स वो तो एक ही. Okay, constant is equals to -k. It is -2 plus a plus 2. That's okay. Constant तो -2a -4b -5 यही आना था. एक सेकंड हम वेट करेंगे तो माइनस माइनस ही है.
That is 4. If you take a equals to 1 will come, and a plus b equals to -1 should come, no? Okay, I will think. I will recheck. I will recheck. I will recheck. Don't waste the time. Circles touching x-axis at a distance 3 units from the origin. If tangents are drawn from the so on, so slope of one tangent, slope of angle between tangents, or if I tan theta, then we have to iterate the formula. We have to iterate the formula. The tangent drawn from the origin to center, origin to circle. What is the equation? What is the equation? I have tried to do this problem 20th. This is a circle. Center 1 comma 2. Radius 1 plus 4 minus 4. Radius is 1. Tangents are drawn from origin. This is origin. So what is this formula? What is this formula? And what is this? This is 90. Slope of tangent line. What is tangent line equation? जब point पता चलेगा तो तभी निकलेगा. Point तो पता नहीं है. This is origin. Angle दिया नहीं है. कैसे? रेडियस तो हाँ अच्छा इसकी रेडियस 1 है. अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर मैं ऑलरेडी एवेल्यूएटेड. अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c is nothing but 2 to the 4, so 1 you will get 1 is the radius. अब ये इक्वेशन है. पासिंग थ्रू ऑरिजिन की. This is the key point. What is a line passing through origin? Y equals to mx. Y equals to mx. Or this line equation mx plus y is equals to 0. Perpendicular distance is 1. अब आंसर निकालो. अब मुझे m बताओ. Perpendicular distance is 1 from this point to this line. m बताओ. अब खुद ही बताओ. अब ये डिस्टेंस तो ये पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर में मिला हुआ है. इट इज √5. हाइपोटेन्यूस इज √5. Hypotenuse is √5. What is the slope? I want slope. Perpendicular distance क्या होता है? Perpendicular distance 1 is equals to mod. ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है. m plus 2 by m square plus 1. m square plus 1 is equals to m plus 2. m square minus m minus 1 is equals to 0. Now you will get a problem. It is not simple. एंगल बिटवीन टेंजेंट इज. अब उसके लिए एंगल निकालना पड़ेगा. उसके लिए पहले लाइन 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 तो होना चाहिए. अब ये है 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस. दिस इज थीटा. उसका डबल करना पड़ेगा हमें. तो ये 3/4 ये आना चाहिए. ये m इज इक्वल्स टू 1 1 m plus 1 mod a1.
वो तो आएगा बट पहले m आना चाहिए। बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी तो आना चाहिए। इसकी स्लोप क्या है? mx y इक्वल्स टू mx में m स्लोप होगा, तो y इज इक्वल्स टू mx y इज इक्वल्स टू mx। सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, देखा मैंने कितना बड़ी मिस्टेक किया। जब ये माइनस है तो ये माइनस है तो ये तो प्लस होगा। अब ये तो और भी प्रॉब्लम है। -2 माइनस m प्लस 2 y इक्वल्स टू mx माइनस m प्लस 2 भाई ये अंडर रूट है। अरे कितना मिस्टेक्स किया है। I made a lot of mistakes। देखा, I made a lot of mistakes। What is this? M square plus 1 is equals to m square minus 2m plus 4। m square plus 1 is equals to m square minus 4m, at minus 4m। again I am doing m plus 2 m minus m plus 2 whole square plus 4 mm गया। ओके अब आ गया क्या आंसर? इट इज -3 by -4, 3/4। दिस इज ट्रू। आंसर इधर ही है, हम ही दूर भाग रहे हैं। ओके, so this is, you will have an equation, and what is this? This is 90। hypotenuse is √5, hypotenuse is √5, and this is 90। this will be adjacent, and we have opposite by adjacent, we have opposite by adjacent, no, opposite by hypotenuse। we have, this is adjacent, this is opposite by hypotenuse। opposite by hypotenuse means sin theta is equals to, what is sin theta is equals to 1 by √5। what about cos theta is equals to, अब ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। it is √5, it is 1। what about this length? अब ये तो टेंजेंट की लेंथ भी हो गया, तो बेस फार्मूला, फिर इसको x मानोगे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। x स्क्वायर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 ही होगा, एंड दिस इज 2 क्योंकि -2 तो होगा नहीं। एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा इज इक्वल्स टू, it is cos theta is equals to adjacent by hypotenuse, it's a 2 by √5, 2 by √5। so what about tan theta is equals to sin theta by cos theta, sin theta by cos theta, so 1 by √5, it's a 1 by 2। this is wrong, angle between them, this is also wrong। slope one of the tangent is not defined। why it is not defined? it is not defined because हमें एक ही स्लोप आया था, ये दूसरा स्लोप आया ही नहीं है। देखा आपने, m स्क्वायर कट चुका है, ठीक है, तो उसके ड्रा नहीं हो पाया। कैन यू क्रॉस चेक द ऑप्शंस? 1 2 4, 2 में हमने कुछ गड़बड़ किया है। फिर 2 में एंगल बिटवीन देम इज 4/5। इज इट √5 और इट इज 5? x इज 5, ये √5 कैसा आया? √5 तो ये तो डिस्टेंस है, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके, चेक करो, 2 तो सही हो सकता है, 2 तो सही होगा, इसको चेक करते हैं। अरे भाई ये नहीं,
विल क्रॉस चेक। मैं इसको देखूंगा इसके टाइम में। इसके अंदर कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम्स भी हट चुका है। 19 का भी देखना था। 14, 15, 16 is done, and this up to level 1, 2, 3, 4 problems I will cross check advance. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, so I will do explain by tomorrow. I'll do explain by tomorrow. Control S. Okay. तो अभी सर्किल का एक और वर्कशीट है, एक बार देख लो। भेजो मुझे वर्कशीट भेजो। अच्छा, मैं अभी क्योंकि ये वर्कशीट तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। विल कम बैक। चलो अभी रोक लेते हैं, ठीक है। विल स्टॉप हियर। कंट्रोल एस। ओके। बट आप ना मुझे वो तीसरी वर्कशीट भेज दो। इसको कल बाकी सब कुछ वाइंड अप करेंगे। सर्कल्स का कल तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर, बट प्लीज सेंड। उसको अभी भेज दो, मैं एक बार देखूंगा। एंड आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क भी दूंगा इस हफ्ते से, ठीक है। Student, she is doing work on the practice notes. Okay, I will stop here. We'll continue tomorrow.